So this whole family is 9,000 families that contain standards for quality management system, right? I cannot see the picture over here. Can anyone tell me that they are able to see the pictures clearly or not? No. पिक्चर्स आपको क्लियर नजर आ रही है नहीं? No, images इशू are है? not much. No. इशू है? ओके ओके फाइन. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. यस. So, starting by starting from here, ISO 9001 and 2015. Basically, it's all about plan, do, check, and act. It's a recognized standard for quality management system, and its purpose is to maintain a certain level of quality excellence that would give the productivity, increase customer satisfaction, obviously, which should be a primary goal of every organization, and profit for the organization, right? Obviously, if an organization achieve a certain level of customer trust, then it is also build a nice reputation in the market, obviously, right? So, uh, we have the main focus over here is certain level of quality excellence. We will work further on it. We will see the principle. We will see how an organization can achieve it, right? So if you imagine an industry, so what do you think, which key points will you consider regarding the management? How should your management system be? What goals should it focus? Anyone? Yes, yes. What do you think that? What do you think that? Which key point should management focus? Should an organization should focus? Be focused by any organization? What goals should be there to be targeted? Food safety, quality, legality, and authority. Exactly. Safety, quality, well aware of objectives of organization. बिल्कुल ऐसा ही है. Okay. Okay. So these are the areas on which work should be done by management, right? बिल्कुल. Maximum productivity and minimum cost. Point. Health, safety, and process development. True. Exactly. Actually, I'm gonna introduce the principal management. So trainings बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा जी. Good response. Good response. Okay. We will look into the principles of quality management. Number first is customer focus. What do you think? How should be, uh, organization should focus this key area? किस तरह से हम जो है वो इसको टारगेट कर सकते हैं, किस तरह से इस टारगेट को फुलफिल कर सकते
It could be like this, that the product or services you are offering should be up to the mark in a way that आपका रिलेशनशिप जो है वो कस्टमर से जो बिल्ड हो वो लॉयलिटी का बिल्ड हो, वो ट्रस्ट का बिल्ड हो, ठीक है ना. सो one can go for social networks. Obviously today is the era of internet, so one should go for social networking more, because आजकल लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करना और जो है वो थिंग्स जो है वो ऑनलाइन बाय करना ज्यादा पसंद करते हैं. प्लस अगर किसी को जो है वो कोई चीज बाय भी करनी होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल he goes to the website and check the reviews and all that, right? So product or service reputation is the, it should rise. प्रिंसिपल नंबर 1 इसी को रखा गया है कि कस्टमर फोकस जो है वो हमारा प्राइमरी टारगेट होना चाहिए. सेकंड वन इज लीडरशिप. सो leadership defines the leadership basically होल्ड करके रखने का नाम है. किसी भी चीज को होल्ड करके रखना, राइट. ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर कर दे, राइट. और सारे रिसोर्सेज जो है वो भी आपके टॉप मैनेजमेंट को ही प्रोवाइड करने होते हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए आपके एम्प्लॉयज को, सारी अवेलेबिलिटीज जो है वो रिसोर्सेज की होनी चाहिए, और आपका स्टाफ ज्यादा से ज्यादा अपने फोकस के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, राइट. सो लीडरशिप जो है वो इस चीज का नाम. नंबर थर्ड इज एंगेजमेंट ऑफ पीपल. ऑब्वियसली जो भी आपका स्टाफ है, आपका आपके एम्प्लॉयज हैं, वो जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी आपका मोटिव है, जो भी आपका जो है वो टारगेट है, उसमें जो है वो फुली इन्वॉल्व होने चाहिए. उनको फुली जो है वो वैल्यूड फील होना चाहिए कि यस वी आर वैल्यूएबल, वी तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ स्टाफ कंट्रीब्यूशन, ये जो है ये उनको जरूर आपने जो है ना इस चीज की वैल्यू इसको रियलाइज करवानी है. ऑर्गेनाइजेशन शुड एम्पावर द पीपल टू टेक इनिशिएटिव, राइट, एंड प्रमोट अ क्वालिटी कल्चर विदाउट फेयर. मीन्स अगर वो कोई इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं तो जो टॉप मैनेजमेंट है उस चीज को प्रमोट कर, राइट. नंबर फोर्थ इज प्रोसेस अप्रोच. Process approach is basically a method by which you are going to achieve your objectives. Obviously, there is a way to clearly demonstrate that. It should address there are any risk coming in between and should discuss overall outcomes, right? अगर कोई रिस्क है तो उसको जो है वो किस तरीके से आपने ओवरकम करना है, उसके अलावा जो ओवरऑल उसके आउटकम्स होंगे उनको जो है वो क्लियरली डिस्कस करना है. अच्छा, बेसिकली हमारा जो ये पूरा वेबिनार है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. मैं यहाँ एक बात बताए, एक आई थिंक आई एम नॉट क्लियरली ऑडिबल. इज इट ओके नाउ? ओके ओके, लेट मी check. Am I audible now? Yes. Okay, guys. Yes. So, process approach is a method दैट आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका गोल है, आपका जो टारगेट है, उस तक पहुंचने का क्या प्रोसेस होगा इज नोन एज प्रोसेस अप्रोच, राइट. तो आपकी प्रोसेस अप्रोच जो है वो क्लियर होने चाहिए, आपका प्रोसेस जो है आपके एम्प्लॉयज को क्लियर होना चाहिए. और अगर कोई रिस्क जो है वो दरमियान में आ रहे हैं, कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होके इसको इफेक्ट करने वाले हैं, तो उनको भी जो है वो आपको क्लियरली डिस्कस करना चाहिए विद इन द टीम so that you can overcome, right, overcome them. You should discuss overall outcomes.
यानी कि जो भी आउटकम एक्सपेक्टेड है वो आप प्रॉपरली डिस्कस करो अपने एम्प्लॉयज के दरमियान, अपने जो है वो मेंबर्स के दरमियान, ताकि जो है वो आपका प्रोसेस और ज्यादा आसान हो जाए। बिकॉज हमें जब पता होता है कि हमें ये रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं तो हम इजीली उसको गेट ओवर करते हैं, राइट? सो that should be transparent between you and your employees, right? Number fifth is improvement. Improvement, obviously, every successful organization focus on continuous improvement. We know that improvement makes more, perfection की तरफ जो है वो जाने का एक रास्ता है इम्प्रूवमेंट। अगर आप किसी चीज में जो है वो आपकी इम्प्रूवमेंट मांग रहा है, कोई प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मांग रहा है, कोई अप्रोच आपकी इम्प्रूवमेंट मांग रही है, कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड मांग रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे तो वो टाइमली जो है वो अपने टारगेट को मीट करता जाएगा, अपने गोल्स को अचीव करता है। अदरवाइज क्या होगा कि वो चीज जो है वो पीछे रहती जाएगी और आपकी अल्टीमेटली क्या होगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर जो है वो इफेक्ट आएगा। So improvement can be done by employee training, technological upgrade, or process improvement. Example, for example, अगर हम इसकी एग्जांपल देखना चाहें, जैसे कि अगर मैंने लेट्स से आई हैव अ बेकरी इंडस्ट्री एंड आई एम एक्सपीरियंस metal contamination in my product, so मुझे यहाँ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट चाहिए। बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग जो है वो नीडेड होती है, और उसके लिए जो है वो हमें हमें सेमिनार्स कंडक्ट करने पड़ते हैं, हमें जो है वो सेशंस कंडक्ट करने पड़ते हैं ताकि हम एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, ऑब्वियसली हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर नंबर ऑफ टाइम्स ये होता है कि अनक्वालिफाइड जो है वो हमारे पास स्टाफ काम कर रहा होता है और उसे हाइजीन का नहीं पता, उसे पर्सनल हाइजीन का नहीं पता, उसे क्वालिटी का नहीं पता, उसे सीसीपीज का नहीं पता। So in that case we go for employee training and this cause continuous improvement, right? Number 6 is evidence based decision making. देखिए, एक जो है वो सेंट्रलाइज पॉइंट बनाना, हर ऑर्गेनाइजेशन, एक successful organization always make a centralized point for all data to be gathered to provide a single source of truth. मतलब क्या हुआ इस बात का? जितना भी डाटा है उस सेंट्रलाइज पॉइंट पे हमने क्या करना है, गैदर करना है। और जब हमारा डिसीजन मेकिंग का स्टेप आएगा, जब हमें किसी कोई स्टेप हमें लेना पड़ जा रहा है, तो हमें जो है वो उस सेंट्रलाइज पॉइंट पे आके हमें उस सोर्स ऑफ ट्रुथ को ढूंढना है, उस एविडेंस को ढूंढना है जिससे हमारा डिसीजन मेकिंग इजी हो सके। ठीक है? द डाटा शुड बी बैलेंस्ड टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन। बेसिकली द डाटा कलेक्शन हेल्प्स इन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, राइट? सो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग जो है वो अनसर्टेनिटी से जो है वो बचाते हैं और एग्जैक्ट और अप्रोप्रिएट जो है वो डिसीजन मेकिंग में जो है वो हेल्प कर रहे हैं। सो एविडेंस बेस्ड डिसीजन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रूशियल स्टेप। Number 7th and the last principle is about relationship management. Quality management depends on relationships. We know it better. If you are um, linked with any organization, there is a relationship between suppliers, between partners, between customers and investors. So इनका जो रिलेशनशिप है उसको जो है वो इस तरह से मैप करना है कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को इसमें बेनिफिट, राइट? अपने रिलेशनशिप को मैनेजमेंट के लिए प्रायोरिटाइज करना एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से जानती है, और इन सारे रिलेशनशिप को बैलेंस वे में इस तरह से लेके चलना कि हमारी प्रोडक्ट की जो है वो क्वालिटी, हम जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है वो डे बाय डे इंक्रीज, राइट? So this was all about the principles of quality management. I hope
these points. I hope these points are clear. Okay. Moving towards next slide, that is about high level structure. Harmonized or high level structure basically define common terms, concepts, and chapter. There are about 10 clause in it that has a strong focus on top management and context of the organization, right? So the first one is scope. देखिए होता क्या है कि हाई लेवल स्ट्रक्चर में ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमाइज बन रहा होता है, राइट? तो इसमें सबसे पहले जो है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या मेंशन करेगी, सबसे पहले जो है वो स्कोप मेंशन करेगी। ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स एबिलिटी प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे ब्रीफली जो है वो डिस्कस करना होता है कि उसकी क्या एबिलिटीज हैं, किस जो है वो कैटेगरी का प्रोडक्ट या सर्विसेज वो जो है वो ऑफर करने वाली है, राइट? सो स्कोप इज ऑल अबाउट दैट। Then comes normative references. In normative references, there are related or relevant standard to that organization are listed, right? यानी अगर मेरी बेकरी इंडस्ट्री है तो कौन कौन से स्टैंडर्ड जो है मुझे वो फॉलो करने होते हैं, वो सबकी जो है लिस्ट जो है ना वो इस सेक्शन के अंदर जो है वो डिस्कस होगी, वो लिस्ट डाउन होगी, ताकि मुझे इस बात का आइडिया हो सके कि कौन कौन से जो है वो स्टैंडर्ड्स मेरी इंडस्ट्री ने, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने या एम्प्लॉयज ने जो है वो फॉलो करना। नंबर थर्ड इज टर्म्स एंड डेफिनेशंस। हर स्टैंडर्ड, हर जो है समझ लें कि हर एरिया की कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो कि स्पेसिफिकली उसी एरिया या उसी सेक्शन के लिए जो है वो मखसूस होती हैं, लाइक for example organization, what is organization, what the role of organization should be there in society, what is management, how should be the management of any organization, any food organization, how should be the performance of its employee, how should be the performance of its product, how should be the performance of its any service it is offering, right? What corrective action should it take, how which type of incidents can it, you know, ये कौन किस तरह के इंसिडेंट्स जो है वो इसको फेस करने पड़ सकते हैं, इम्प्रूवमेंट जो है वो किस तरह से होगी, इम्प्रूवमेंट जो है वो किस मतलब उस टर्म क्या है, व्हाट इज द टर्म इम्प्रूवमेंट इज, राइट? तो बेसिक जो मेजर कॉमन टर्म्स हैं उनको जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ताकि जो भी इसको रीड करने वाला है उसको जो है वो एक आइडिया उसके माइंड में जनरेट हो जाए कि अब हम बात क्या करने वाले हैं फर्दर इस ऑर्गेनाइजेशन से रिगार्ड, राइट? सो नंबर 4 इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसको मैं अपनी जबान में इसको कहूंगी स्टेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इस वक्त स्टेट क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से इफेक्ट कर रहे हैं, इंटरनली वो जो है वो कितनी वीक या कितनी स्ट्रॉन्ग है, राइट? हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं और कुछ जो है वो स्ट्रेंथ्स होती हैं, ऑब्वियसली लाइक ऑलवेज नथिंग इज परफेक्ट। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यही बेसिकली जो है वो मेंशन होता है कि किस तरह के इश्यूज और लैकिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहे हैं, दे मे बी इंटरनल, दे मे बी एक्सटर्नल, right? So it has to gather and documented all of that issues over here so that it can make further policies and take further steps or improvements, right? यानी अगर आपके पास पता होगा कि मेरी ये वीकनेस है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ये वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ है, तो फर्दर आपको पॉलिसीज, फर्दर आपको रूल्स बनाने में, फर्दर आपको
एम्प्लॉयज सॉरी सिलेक्ट करने के दौरान जो है वो इसमें आपको हेल्प मिली. These matters should be marked so that they would be more helpful before any decision, right? So context of organization बहुत important है. Next page पे मैंने context की एक जो है वो example भी यहाँ मैंने highlight की थी, but I think it got lost. So the key issues, I will define it here. The key issues define the aspects of context that influence the organization's purpose, objectives, and sustainability. जैसा कि मैंने आपको भी बताया, they also provide the input to policy making and objective setting. हर ऑब्जेक्टिव ऐसे ही नहीं सेट हो जाता. ऑब्वियसली जब आपकी कुछ वीकनेस होती है तो आप भी उस हिसाब से जो है वो चीजें और पॉलिसी जो है वो मेकिंग करते हैं, राइट? सो विच में भी क्वालिटी हो सकता है, क्वालिटी जो है वो सफर कर रही हो, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो, इन्वायरमेंटल मैटर्स हो. फॉर एग्जांपल अगर आप की जो है वो इंडस्ट्री किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे रेनफॉल का ज्यादा जो है रहता है इन्वायरमेंट, सो मे बी उसकी जो है वो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आपकी प्रोडक्ट को अल्टीमेटली फेस करने पड़ रहे हो, राइट? एनर्जी वहां पे जो है वो लैकिंग हो सकती है, एनर्जी लैकिंग हो सकती है. लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी हो गई हमारे पास जो है वो गैस जो है हो गई. उसके अलावा हमारे पास वाटर या दूसरे सोर्सेज हमें जो है वो लैकिंग में हो सकते हैं. सेफ्टी और सिक्योरिटी के इश्यूज जो है वो हमें अराइज हो सकते हैं किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप या बिल्ड करते वक्त. तो ये सारे इश्यूज जो है वो क्लियरली नोट डाउन होने चाहिए. तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का यही पर्पज है कि जो है वो इन सारी चीजों को, इन सारी लैकिंग्स को जो है वो एक जगह नोट डाउन किया जाए, एक जगह मेंशन किया जाए, ताकि अगर ऑडिट होता है या कहीं से भी जो है वो किसी किस्म का लाइक किसी तरह से भी चेक एंड बैलेंस एग्जामिनेशन होता है तो उस दौरान जो है वो आप उनको ये प्रेजेंट कर सकें, राइट? नेक्स्ट वन इज sorry, a window is appearing again and again. I'm not able to see it clearly, right? Okay, the next one is leadership. I have discussed it before. Top management should always be responsible and committed. Policies should be clear. Organizational functions should be carefully implemented, right? जिस जिस पर्सन का जो रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फंक्शन है, वो अपने रोल के साथ प्रॉपरली कमिटेड होना चाहिए. और इस चीज को इंश्योर कौन करेगा? इस चीज को इंश्योर करेगा टॉप मैनेजमेंट, राइट? जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी रिसोर्सेज यूटिलाइज होने हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको अवेलेबल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टॉप मैनेजमेंट की, राइट? सो लीडरशिप सिर्फ बड़ा होने का नाम नहीं है. लीडरशिप का मतलब है कि आप प्रॉपरली उसको ओन करें और अवेलेबल करें उन चीजों को जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, राइट? सो नंबर 6 इज प्लानिंग. Planning should always be solid. Planning should always be strong before taking any initiative, right? All action plans should be implemented in a way to reduce risk and avail opportunities. Obviously, every organization wants that risk जो है वो कम से कम हो और अपॉर्चुनिटीज का जो विंडो हो मेरे पास वो वाइड ओपन, राइट? तो इसको करने के लिए, इस सिचुएशन को बनाने के लिए जो है वो हमें प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है, सॉलिड प्लानिंग की जरूरत होती है, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होनी चाहिए, राइट? प्लानिंग किस तरह की होनी चाहिए? प्लानिंग कोई भी टास्क परफॉर्म करने से पहले, कोई भी टारगेट अचीव करने से पहले, प्लानिंग शुड डेमोन्स्ट्रेट व्हाट इज टू बी डन. शुड बी वेरी क्लियर कि करना क्या है हमें. ये ना हो कि हमारा टारगेट कुछ था और हमारा रास्ता जो है वो कहीं और ले गया. इट शुड बी वेरी क्लियर दैट व्हाट इज टू बी डन, what resources should be needed. इस
पर्पस के लिए हमें कौन से रिसोर्सेज जो है वो नीडेड हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, डिफरेंट हमारे पास जो रोल्स हैं, डिफरेंट पीपल हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दैट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जरूरी है, ये नहीं कि सिर्फ रोल है किसी भी पर्सन के पास और वो जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो उसको ओन नहीं कर रहा और उसको फुलफिल नहीं कर रहा, राइट। सो मीन्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ रोल असाइन नहीं करना, उसकी इवेल्युएशन भी करनी है टाइम बाय टाइम, राइट। कि वो किस जो है वो स्टेज पे है, कहीं उसे किसी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम तो फेस नहीं करना पड़ा, कहीं जो है कोई चीज स्टक तो नहीं हो गई है। सो evaluation is very necessary for effective planning, right? Number 7 is support. Majorly small organizations or the organization that do not have massive setup, that is not fully full-fledged organization, uh, that organization should document if it needs any support regarding any operation, right? For example, आपको नीड हो सकती है रिसोर्सेज की, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन की, या फिर किसी किस्म की कम्युनिकेशनल सपोर्ट जो है वो नीडेड हो सकती है। वन कैन बी सपोर्टेड बाय पीपल और थ्रू देयर अवेयरनेस और competencies, right? Other management system can also support by virtue of their documented information और communication, यानी कि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास जो है वो जितनी भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है, मे बी आपको जो है वो डॉक्यूमेंटेड सपोर्ट की जरूरत है। तो सपोर्ट जिस किस्म की भी आपने ली है, लेनी है या ले सकते हैं, वो जो है वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, राइट। नंबर 8 इज ऑपरेशन। Generally, organization break down its activity into processes, different processes that may be internal or external, like ISO 2000 and ISO 9001 2015 also covers these process now. So ऑपरेशन जो भी परफॉर्म होना है वो आपके एम्प्लॉयज को क्लियर हो। ऐसा ना हो कि कोई ऑपरेशन या कोई प्लानिंग जो है वो उसका इनिशिएटिव हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है एंड नो वन नोज। ओके, सो एम्प्लॉयज जो है ना एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आके जो है वो उस ऑपरेशन के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे, अपना जो है वो उसके अंदर प्रॉपर पैटर्न जो है वो शो करेंगे, राइट। नंबर 9 इज परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। Generally, organizations used to evaluate performance through monitoring or measurement analysis or evaluation. Normally होती है कि organizations के अंदर monitoring हो रही होती है different performance के लिए. Let's say if something is performed, they note down every aspect, like what they have performed or when it was performed and who performed it. Then it will be quite helpful in future if you have evaluate the performance, previous performance timely, right? जैसे कि मैनेजमेंट खुद भी कर सकती है, लाइक इंटरनल ऑडिट करा सकती है, टाइम बाय टाइम एनालिसिस अप्रोच हो सकती है, या मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ठीक है जी। तो मैनेजमेंट खुद भी जो है वो रिव्यूज दे सकती है आफ्टर टेकिंग अ व्यू ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टाइम बाय टाइम इज वेरी नेसेसरी for the improvement for the reputation of performance overall organization or product, right? The next is improvement. Continual improvement. I have discussed it before in principle section that continual improvement should be focused. Mishap or any type of requirements of improvement
there should be an immediate notice to solve that out, right? Because it gonna affect your product overall or service quality, right? So continuous improvement जो है वो necessary है किसी भी organization के लिए, ताकि उसको वो fully. Yes, if there are any questions regarding the session, you can ask me in the last, right? I'll give you about 10 to 20 minutes. Will easily, inshallah, solve your queries. Na? So you can ask me then. So it was all about high level structures. It was all about the requirements. Organization must report. The next one is objectives. जी, तो अब जो है वो हम बात करेंगे यहाँ से ऑडिट. अभी तक जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टैंडर्ड क्या कहता है और स्टैंडर्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या जो है सजेशन दे रहा होता है, किस तरह से जो है वो अपने प्रिंसिपल को मीट कर सकते हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रोडक्शन को या किसी भी ऑपरेशन को लीड करना होता है, राइट? सो अब यहाँ से जो है वो हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि आईएसओ ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और यहाँ आप लोग ऑब्वियसली मेरा साथ भी देंगे. व्हाट डू यू थिंक, what should be the objective of ISO audit? Like for example, if you suppose that you are an auditor, then you'll have to go in an organization. So what should be your objectives? Any idea? I think we should get Proper checking of SOPs. yes, Exactly. limitation. Ensure wholesomeness of the food. Documentation very well. Ingredients halal and haram. I think you want to write halal and haram. Ingredient. Exactly. The ingredient source to help organization improve their quality of product. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. देखिए, आईएसओ ऑडिट्स के नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है. इसके अलावा भी जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, राइट? आपने कहा टू हेल्प हैज अ प्लान. बिल्कुल बिल्कुल अनस, मिस्टर खुर्रम. इंग्रेडिएंट्स एग्जैक्टली. तो हमारे पास जो है वो मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. कुछ जो है वो यहाँ पे मैंने डिस्कस किए. ठीक है जी. तो नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसके अलावा भी अगर जो है वो मेरे माइंड में आएंगे तो वो मैं डिस्कस करती जाऊंगी, बट जो यहाँ पे रिपोर्टेड है वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ पहले. टू चेक सुटेबिलिटी दैट which standard will go for the specific sort of organization, right? Organization, हर organization हर स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर सकती. हर स्टैंडर्ड हर ऑर्गेनाइजेशन में फिट नहीं हो सकता. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू डू जीरो ऑडिट. यू मस्ट हैव लिसन अबाउट द जीरो ऑडिट. जीरो ऑडिट में क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो ऑडिटर जाता है और वो चेक करता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज मिसिंग है, क्या लैकिंग्स हैं, किन एरियाज पे जो है ये वर्क कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए. तो सबसे पहले जो है वो सुटेबिलिटी चेक जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो किया जाता है कि which in the standard will go for the specific sort of organization, right? So it's all about zero audit basically. Next is which procedure will be followed or what conditions should be implemented. Basically this is done in zero audit, right? कि प्रोसीजर्स कौन से फॉलो होंगे, किस तरह की कंडीशंस हमने क्रिएट करनी है,
किस तरह के क्राइटेरिया पे हमने ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है, ठीक है। वी हैव टू guide it according to the needs. Also, he will highlight the areas which need improvements. Like for example, अगर hygiene का issue आ रहा है किसी organization को during washing, generally during washing because there is lot of water and वहाँ पे जो है वो control जो है वो proper होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है वहां पे बायोलॉजिकल कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते हैं, राइट। सो सॉरी गाइस, यहाँ अजान हो रही है तो वी शुड टेक 1 to 2 minute ब्रेक, राइट।
Okay, guys, is my screen visible to you guys? Like these slides are visible to you? If yes, type yes in the chat box. Sorry, I cannot hear you. Are my slides visible to you? Okay, I think. Okay, fine. Because before when I shared document with you, the pictures were not visible. Can you see the context of organization now? See, there are context factors जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि how the document look like. Context factors होते हैं इसके अंदर political, economic, social, technological और बहुत से factors होते हैं जो कि अल्टीमेटली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को, अल्टीमेटली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? तो ये कॉन्टेक्स्ट होता है, इसको मैंने जो है वो अलग से रखा था बिकॉज इट्स अ वेरी क्रूशल, इट्स अ वेरी मेन पॉइंट which should be highlighted very clearly na, so that is why I made a separate slide of that. Okay, we were discussing objectives of ISO standard, ISO audit. So second one was to ensure consistency in implementation of processes. Organization सिर्फ एक दफा जो है वो किसी भी प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगी, किसी एक दफा प्रोसेस को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, बल्कि ये जो है वो अब लाइफ टाइम रहेगा कि किसी भी जो है वो स्टैंडर्ड के implementation होगी तो वो थ्रू आउट द लाइफ होगी, और जब तक ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक वो प्रोडक्ट है, इस चीज को मेक श्योर करेगी कि कस्टमर को हमेशा जो है वो सिमिलर प्रोडक्ट मिलती रहे. To look for areas of improvement and to develop key processes and working conditions in your organization. Obviously improvement हमने पहले भी डिस्कस किया. Improvement वो पॉइंट है जो कि हमें कंटिन्यूसली जो है वो फोकस करना है इन ऑर्डर टू दैट के हम जो है वो Excuse me, कंटिन्यूसली उसके आउटकम्स. Yes, who's ma'am, speaking? sorry for disrupting, but slides are stuck. Sorry, you are not audible. Ma'am, slides are stuck. Only first slide is visible. Slide is not visible. Yes, ma'am. First slide is visible. They are not moving. Okay. Okay. Is it visible right now?
No, ma'am. Not visible. I think I should have shared document like previous. Okay. Okay, let me share it. Okay, guys. Are slides visible now? Yes. Fine. We were discussing objectives, right? So, um, improvement areas should be, properly worked. Then next is to comply with statutory and regulatory requirements. If organization need any requirement to meet any goal, then it should be documented. It should be checked by the auditor, right? To fulfill customer requirements or market demands, right? Organization should work for its customers, right? अगर organization customer को satisfy नहीं कर पा रही है या उसकी requirements को fulfill नहीं कर रही है, then there is a question mark on that organization. So audits का basic यही objective होता है कि जो कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस मिल रही है वो किस सॉर्ट की है, किस नौयत की है, either it is acceptable or causing any harm or causing any mishap, um, yani in case of health or in case of quality or many more, right? So Mr. Aswar, you have raised your hand. Is there any query? Mr. Aswar, you have raised your hand. Okay. Now we will discuss type of audits. There are three types. Your slide not be proper. I see that now. In general. Firstly, we have internal audit. As you want to see the previous one, the objective one. You want to see objective slide or context? Mr. Huram, I think there is an internet connection problem at your side, na? So you need to solve it because my other members are not texting me or okay, fine. Slides stuck. Is there problem? Okay, okay, thank you. So we were discussing types of audits. The three kind of audits I have told you before that first we have the internal audit.
internal audit is also known as first party audit, in which an organization nominates auditor by itself and ask him to audit the organization by its own, right? तो जो भी डेजिग्नेटेड बंदा होता है वो क्या करता है, वो ऑडिट परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जहाँ लैकिंग होती है, जहाँ किसी चीज़ की नीड होती है, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, उसको वो हाईलाइट करता है। इससे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हेल्प मिलती है कि रादर कोई बाहर का बंदा आके जो है वो उस चीज़ को हाईलाइट करे, ऑर्गेनाइजेशन खुद जो है वो बाय ओन सेल्फ इसको लर्न कर लेती है, राइट? Then comes second one, that is supplier audit or second party audit. The person or the organization which is purchasing party, which is purchasing something, which is taking some supplies from you, or which is buying ingredients or different sort of materials from you, then they used to audit in your organization, right? तो जो आपसे बंदा जो चीज खरीद रहा है, मटेरियल बाय कर रहा है, इंग्रेडिएंट बाय कर रहा है, वो जो है वो आप पे ऑडिट करता है। उनके जो है वो ऑडिटर्स आते हैं और वो जो है वो आपके सिस्टम को एग्जामिन करते हैं, राइट? और जो भी लैकिंग्स हैं, जो भी वीक पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट करते हैं। देन कम्स एक्सटर्नल ऑडिट और थर्ड पार्टी ऑडिट, which is conducted by other organization. Like आपकी बेकरी इंडस्ट्री है, आपके ऊपर ऑडिट करेगी कोई दूसरी बेकरी इंडस्ट्री। आपकी कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री है, देन द अदर कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री विल कम एंड ऑडिट यू, राइट? तो आईएसओ कंप्लाइंस को जो है वो बेसिकली वो लुक ओवर कर रही होती है कि किस तरह से आपका स्टैंडर्ड उनके मैंडेट से अलाइन होता है या नहीं होता, आप कितना किस हद तक उसको जो है वो फॉलो कर रहे हो, और कहाँ कहाँ जो है वो लैकिंग आ रही होती है। तो जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है, ये थर्ड पार्टी ऑडिट होता है। इसमें की जो है वो बेसिकली हम ज्यादा जो है वो चीजें हाईलाइट हो रही होती हैं, बिकॉज अपनी गलतियां जो है वो कम ही हमें नजर आ रही होती हैं, दूसरे को वो ज्यादा नजर आ रही है। तो सो इट इज द मोस्ट स्ट्रिक्ट वन, राइट? So the next is roles and responsibilities of ISO lead auditor. ISO लीड और जो ऑडिट परफॉर्म कर रहा है, लीड ऑडिटर, उसके कुछ रोल्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ जो है वो उसकी पॉइंट्स हैं जो कि उसने फॉलो करना। लाइक फॉर एग्जांपल प्लानिंग द ऑडिट, ऑडिट कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा, कितने मेंबर्स होंगे, और लाइक इट टेक्स टुगेदर ऑल रिक्वायरमेंट्स, राइट? सारी रिक्वायरमेंट्स जितनी भी गैदर करनी है, ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिसिटीज होती हैं। लाइक इफ इट्स अ बेवरेज इंडस्ट्री, देयर विल बी अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ examination, right? Rather we do for bakery or any other food industry. बेवरेज के डोमेन में थोड़ा अलग हो जाएगा, बेकरी के डोमेन में थोड़ा अलग हो जाएगा, तो सबके जो है वो प्लान्स जो है वो कस्टमाइज बने। ठीक है जी। तो ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लीड ऑडिटर के ऊपर आती है। सेकंड वन इज कंडक्टिंग ऑर्डर ऑडिट, ऑब्वियसली जो ऑडिट है वो भी जो है वो आपके लीड ऑडिटर को परफॉर्म करना है, उसको कंडक्ट करना है। देन नंबर थर्ड इज कम्युनिकेशन, that also comes under the role of lead auditor. Then comes team management. It will include the selection of personals, assigning of their roles, mark their deadlines, etc., etc. Because lead auditor at its own ही सब कुछ जो है वो प्लान नहीं कर सकता, हर जो है वो रोल खुद ही फुलफिल नहीं कर सकता, उसने पर्सनल्स जो है वो सिलेक्ट करने होते हैं, उसने उनको रोल्स जो है वो डिफरेंट देने होते हैं, उनकी डेडलाइंस मार्क करनी होती हैं, राइट? तो ये सब जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो है वो लीड ऑडिटर के अंडर आती है। उसके बाद आ जाता है असाइनिंग रोल्स।
असाइनिंग रोल्स जो है वो मैंने आपको बता दिया कि जो भी पर्सोनल्स हैं उनको रोल्स असाइन करना उनकी कैपेबिलिटीज कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से, उनकी क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, किस तरह से वो जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको जो है वो उस तरह का रोल, उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो असाइन की जा रही होती है। देन कम गाइडिंग एक्सटर्नल ऑडिट्स। ऑब्वियसली जब आपके साथ आपके जूनियर्स होते हैं तो सारे एस्पेक्ट्स जो है वो उनको क्लियर नहीं होते, जो चीज आप देख रहे होते हैं उस सेम आई से जो है वो चीज उन लोगों को एनालाइज नहीं हो रही होती है, तो उनको डेमोन्स्ट्रेट करना अबाउट द ऑडिट, अबाउट प्रिंसिपल्स, अबाउट एथिक्स, बाउंड्रीज एंड मेथोडोलॉजी ऑफ ऑडिट्स, तो ये सब जो है वो लीड ऑडिटर का रोल होता है। नेक्स्ट वन इज चेकिंग कंप्लायंस, that how the stage of organization is in accordance with established standards, standards से कितनी ज्यादा जो है वो familiar है, complies किसी भी organization की किस हद तक उसको फॉलो कर रही है, ये सब जो है वो मेजर रोल्स हैं जो कि लीड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाती है। इज देयर एनी गैप, डज इट नीड इम्प्रूवमेंट, डज इट नीड मोर रिक्वायरमेंट्स, तो ये सब चीजें जो है ये सारा चेक एंड बैलेंस जो है वो उन्होंने लीड ऑडिटर ने जो है वो देखा। देन कम्स फाइंडिंग एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो भी इम्प्रूवमेंट जहाँ भी नीडेड है, जो लैकिंग एरियाज हैं उनको हाईलाइट करेगा लीड ऑडिटर, उनको जो है वो नोट डाउन करेगा, उनको जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट है ये भी उसकी जिम्मेदारियों के अंदर आ जाता है। Then starting and finishing of audit is also the responsibility of lead auditor. कि start जो है वो भी lead auditor ने लेना है, जब जो है वो enter होते हैं इंडस्ट्री में किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो है उसका स्टार्ट लेना, और एंड में जो है वो रिपोर्ट राइटिंग, टिल रिपोर्ट राइटिंग जो है वो आपने, वो लीड ऑडिटर ने जो है वो अपना डेजिग्नेटेड जो उसका रोल है वो उसको उसने संभाल के रखना है, और एंड जो है वो उसी ने ही जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को खुदा हाफिज कहना। ठीक है जी। सो these were the roles and responsibility of ISO lead auditor, which is the basic, the core of our today's discussion, right? Now these are the principles to govern audit. That is, there are some जनरल एटिकेट्स, ऑब्वियसली हर जो है वो परफॉर्मेंस के, हर कंडक्ट के जो है वो कुछ एटिकेट्स होते हैं, प्रेजेंटेड बाय एन ऑडिटर टू गवर्न ऑडिट। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है ना। बहुत कुछ जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग फाइनेंशियल्स एंड अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो लीड ऑडिटर हैव टू रिस्पेक्ट दैट, राइट। लीड ऑडिटर को जो है वो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है, और उस इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट को जो है वो आउट लाउड नहीं कर देना है, राइट। वो एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि आपको दी गई है और वो आप तक ही जो है वो रहनी चाहिए। नंबर सेकेंड इज स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, एक्सपीरियंस एंड ट्रेंड, he should be experienced, he should be trained enough to perform successful audits, right। एक्सपीरियंस हो, उसकी ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपरली हुई हो, अप टू डेट उसको जो है वो अप टू डेट जो है वो रीसेंट चेंजेस पे उसको आइडिया हो, उसको अनाउंसमेंट्स, रीसेंट अनाउंसमेंट्स के बारे में पता हो, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता हो, ठीक है। तो उसकी स्किल्स और कॉम्पिटेंसी जो है ना वो अप टू द मार्क होनी चाहिए। नंबर सेकंड इज नंबर थर्ड इज डॉक्यूमेंटेशन, he should maintain record of important documents, right। ये ना हो कि अगर आप किसी प्लांट पे खड़े हुए हैं, किसी ऐसे एरिया में को खड़े हुए हैं जहाँ आपने क्रॉस चेक करना है, जहाँ पे आपको एविडेंसेस की नीड है, एंड एट दैट टाइम यू डोंट हैव दैट डॉक्यूमेंट इन योर फाइल, राइट। तो आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वेल मेंटेन रखनी है, आपको अपनी फाइल बनानी है, आपने उसके अंदर जो है वो अपने सारे एविडेंस को कलेक्ट करके रखना है इन ऑर्डर टू क्रॉस चेक दैट
functionality or in order to maintain its evidence, right? Number fourth is planning. Planned works always help to be more efficient and timely. We know that. जितनी planning अच्छी होगी, strong होगी, focused होगी, तो उतना ज्यादा जो है वो आपकी functionality enhance होगी. ठीक है. हर प्लान हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमाइज्ड होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, ताकि उससे से ज्यादा आउटकम जो है वो हमें मिल सके और रिस्क के चांसेस उससे कम से कम हो. नंबर फिफ्थ इज ऑडिट एविडेंसेस that should be collected enough to give final opinion, right? Audit evidences को आपने during the audit आपने collect करते जाना है और उसके बाद जो है वो आपने अपना final opinion देना है कबल वक्त वक्त से पहले. विदाउट एविडेंसेस आपने कोई बात नहीं करनी है. यू शुड हैव द प्रॉपर एविडेंस, यू शुड हैव प्रॉपर थिंग to speak on, right? Then comes professional care. जो भी गाइडेंस जिस तरह की भी लाइक प्रोफेशनल हेल्प जो है वो नीडेड है ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपने जो है वो उसको प्रोवाइड करनी है. जी उसको अवॉइड नहीं करना है. यू शुड नो द प्रोफेशनल एथिक्स ड्यूरिंग द ऑडिट. Then comes fair presentation. Obviously, you belong to some organization, you belong to some industry, you have some background, so you have to present it very fair, right? Respectful. So these were the principles to govern audit. Basically, the ethics, the etiquettes that one should follow. Here we have audit checklist. So many of you have made checklist, right? यहाँ पे बहुत से लोगों ने जो है वो चेकलिस्ट बनाई होगी और चेकलिस्ट का आइडिया भी होगा कि चेकलिस्ट क्या होती है. बेसिकली चेकलिस्ट are the standard requirements, list of standard requirements that are mentioned and auditor used to mark them according to the need, criteria and availability, right? यानी जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी क्राइटेरिया होता है, उसमें प्रॉपरली अरेंज्ड मैनर के अंदर लिस्ट डाउन होता है और ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर जो है वो उसको वहां से रेफरेंसेस लेकर और उसको चेक करता है, राइट? अगर कोई चीज प्रेजेंट होती है तो ऑब्वियसली ही विल मार्क इट पॉजिटिवली, और इफ समथिंग इज not present, something is not according to the standard, then he will mark it negative, right? For example, if CCP is required near a hot water line, then he will mark it present or absent, right? अगर CCP है आपके hot water line के पास, तो वो उसको मार्क करेगा, उसको पॉजिटिव मार्क करेगा. बट अगर वहां पे मौजूद नहीं है तो उसके जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स वो वहां मार्क कर लेगा. लाइकवाइज रेफरेंसेस आर मेंशन्ड इन चेकलिस्ट. I hope the concept of checklist will be clear to you guys. Then comes non-conformity and report writing. I have number and number of messages over here, but I cannot read it right now. If there are any questions, so ask me in the last, right? Okay, what is non-conformity? And we know what report writing is. First of all, I will clear non-conformity here. When process has not been performed as it was planned, not performed as it was planned and in accordance with the requirements from the standard. स्टैंडर्ड में रिक्वायरमेंट थी कि हॉट वाटर लाइन के ऊपर CCPs लगानी है और हर टर्न के ऊपर CCP लगानी है, बट
हर टर्न के ऊपर सीसीपी मौजूद नहीं है, ठीक है। पहले थी, अब नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो गई है, तो इसको हम मार्क करेंगे एज नॉन कंफर्मिटी in our report, right? It is basically a failure to meet one or more requirements, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं, जो कि आपकी इंडस्ट्री में मेंटेन्ड होनी चाहिए, वो मौजूद नहीं है, उनको हम एज अ नॉन कंफर्मिटी मार्क करते हैं, ठीक है जनाब। उसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग की अगर हम बात करें तो वी हैव टू राइट रेफरेंसेस ऑफ एवरीथिंग। इट शुड इंक्लूड पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंडिंग्स, यानी कि जो भी पॉजिटिव फाइंडिंग्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी जो है वो मार्क होगी ड्यूरिंग द ऑडिट, और जो नेगेटिव फाइंडिंग है वो भी मार्क होगी, ठीक है ना, इक्वली। इंक्लूड डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस को सरसरी या टू द पॉइंट नहीं देखना है, उसको जो है वो डिटेल में जो है वो नोट करना है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अलावा आ जाता है अवॉइड ब्लेम एंड स्टेट द फैक्ट्स। देखिए इसमें जो है वो ये बेसिक एथिक्स हैं, ये एटिकेट्स हैं ऑडिटर के, कि ब्लेम गेम्स और ब्लेमिंग और कुछ इस तरह की चीज अराइज करना, ऐसी कंडीशन, इट इज नॉट it is not allowable, it is not allowed. You have to state only the facts, जो चीज मौजूद है you have to write straightly on the document, otherwise you will mention mark it negatively, right? You don't have to blame anything. Use figures, visuals and text stylization, राइट? अगर किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना है, किसी चीज को हाईलाइट करना है, किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, so you can use figures, visuals and text stylization that like I have used here. जैसे कि मैंने टेक्स्ट स्टाइल यूज करा है इस स्लाइड के अंदर, कि रेड से मैंने उसको हाईलाइट कर दिया कि ये नॉन कंफर्मिटी बेसिकली फेलियर है टू मीट वन और मोर रिक्वायरमेंट। इधर मेरा टेक्स्ट का जो है वो स्टाइल चेंज है, और बाकी जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो चेंज है। तो इस तरह से आप डिफरेंट स्टाइल्स को यूज करके किसी चीज को हाईलाइट कर सकते हैं, किसी चीज को बैक पे भेज सकते हैं, राइट? तो ये आप जो है वो इस तरह की डिजाइन अपने जो है वो रिपोर्ट के अंदर कर सकते। नेक्स्ट इज ऑडिट follow-up indicates the need for correction. If there is any correction requirement, then you have to indicate in the document, right? Not for or for corrective action or opportunities for improvement. If you think that organization can improve the process in some certain way, then you can highlight in that document, right? अगर आप ये बिल्कुल इसी तरह से कि अगर आप सजेशन देना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, अपॉर्चुनिटीज उसको ऑफर करना चाहते हैं कि आप इस तरह से इम्प्रूवमेंट की तरफ आ सकते हैं, या उसको कोई कोई अच्छा तरीका बता सकते हैं, कोई रास्ता बता सकते हैं, सो यू कैन डॉक्यूमेंट इन द रिपोर्ट, राइट? This is basically the audit follow-up. Such actions are usually decided and undertaken by auditee. जिस पे आपने ऑडिट किया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन पे आपने ऑडिट किया है, उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपने जो है वो फॉलो अप एक्शन कब लेना है और कितने टाइम फ्रेम में उसको कंप्लीट कर लेना है, राइट? सो thank you so much for listening. I hope the whole session will be helpful for you guys. If there are any questions, then you can ask me. प्लीज ये चेकलिस्ट रिपीट कर देनी, ऑडिट चेकलिस्ट वाली। Checklist, okay. So here checklist basically is a list of standards, is the list of references
that should be followed, right? अगर जो है स्टैंडर्ड की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ऑब्वियसली आप उसे लिस्ट डाउन करके लेके जाओगे ताकि वहां पे आप उसका रेफरेंस ले सको और उसको चेक कर सको, राइट? आपके पास वो मेंशन्ड होगा, रिटर्न होगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि आप उसको ओपन करें और उसको चेक करें और उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव मार्क कर दें. So this is all the checklist is about, right? An audit checklist also allows the auditor performing the audit to take references to the standards requirements. Understood? Yes, miss. Thank you. Ma'am, can you repeat the non-conformity? Ma'am, can you repeat the non-conformity? Okay, any question? Any queries? If you guys have any queries, then type in chat box. I'll read it. No question, ma'am. Thank you very much. The session is very Um, informative. Thank you. Thank you once again. I don't know who is speaking, but I cannot hear it right now. Thank you, ma'am. Today's session is very informative. Mister, And it's means out, ma'am. just wait. Thank you. Wait. Okay, speak. Speak. Say. Thank you very much, ma'am. Let's see you again in another session. Okay. Okay. Thank you so much. Allah Hafiz, everyone. Take care. Bye bye.